Assertive communication will protect your own rights without violating others' rights. सबका अधिकार है कहने का, अब उनकी बात भी सुन रहे हैं, अपनी बात भी रख रहे हैं. Assertive communication communicates with respect. The single most important trait of assertive communication. Everybody desires respect. He needs respect. Be it a child of 6 months old, be it old man, be it young people. Everybody wants respect, and everybody understands what respect is all about. Tries to understand, and we are looking at the solution to the problem. When I conduct classes, I always say in the classroom, in dictionary, we have a word called problem. In the dictionary, we have the word called solution. So assertive communicator tries to find solution to it. It may appear to be risky in the short run, but in the long term, relationships are much stronger. As I say, people are conditioned to be passive. I remember one day my ED called me, our head of clinic, and he wanted to talk to me about the vocational training which we give to the students. So we are a PSU, and so a lot of students come to BHL Hyderabad for training. What happens is that in 2 month period, we have around 5,000-6,000 students coming for training. There's a lot of crowding in the plant. My ED called me, said, "Look, Rajesh, so many people are coming. There's a lot of cures. भीड़ हो रही है, disturbance हो रही है production में, ये वो." But I presented my part, my view on the subject. He said, "Sir, these are students to whom private companies are not giving training. We being a PSU, we have our own social responsibility. That's why we are doing this. We are earning some money also when we do this. And we are calling the students only for half a day. So there's not much disturbance." So I put my views across. When the meeting completed. Hello. So pardon me, your voice is breaking. Hello, now it's clear? Hello? Rajesh sir? Yes. Yeah, now it's Hello? clear? Hello? I'm able to communicate? जी, it's clear, sir. Hello? Yeah. You may get a bit louder, sir. Yeah, I'll get a little bit louder. Hello. So what I'm saying is that when my ED called me, his special assistant was with him in my meeting. When we came out of the meeting, his assistant said, "Sir, आपको ED साहब के सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए. ED साहब जैसे बोल दिया था कि ना ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको उनकी बात से एग्री करना चाहिए." उनका लोग, मुझे अपनी बात करने का अधिकार पूरा है, और अगर मैं अपनी बात नहीं कहता तो मेरी बात को समझते कैसे? बोला ED ऐसा पसंद नहीं करते हैं. मैंने कहा मेरे व्यू है, आई शुड बी प्रेजेंटिंग. अगर मैं नहीं रखूंगा तो कैसे समझेंगे? So I put across my point. So that was that I should be taking risks in the short run, but in long term, the ED understood my view, and we had a better communication with my. Now, what are the traits? Eye contact is maintained. Assertive communicator maintains eye contact. He listens and validates others. He's confident and strong, but also flexible. He's objective, unemotional, and present my wishes clearly and respectfully. We'll see a small movie clip. In that, we'll be able to understand what assertive communication is all about. You see that movie clip. Hay que tener 11 peleas
ये पूछ लो कि इसका मेरे सुनने वाला कौन है? एक भाई या एक पुलिस ऑफिसर? जब मेरा भाई बोल रहा है, एक भाई सुन रहा है, जब एक मुस्लिम बोलेगा, एक पुलिस ऑफिसर सुनेगा। कभी तो मेरे ख्याल से तुमने किन लोगों को अपना दुश्मन बना लिया है। आज तो मैंने उन्हें रोक लिया, लेकिन कल शायद ना रोक सकूं। तुम यहाँ से ट्रांसफर ले लो कभी, मैं और चल जाऊं। मुस्लिम भाई पुलिस को बोल रहा है, लगता है वो दीवार जो हम दोनों के बीच है वो इस दूर से नहीं ऊंची है। अरे तुम्हें याद है जब इस रास्ते पे चल रहे उसका अंजाम क्या हो सकता है? इस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ उसका अंजाम शायद बुरा भी हो सकता है, लेकिन जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसका अंजाम सिर्फ बुरा ही होता है भाई। अरे मैं तो अपनी मर्जी खेल चुका हूँ, बाहर हूँ, मैं जीता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास तो भी बात है। इस शहर के बाहर दूसरे शहर में तो कुछ स्टेशन होते हैं, वहाँ चले जाओ। असूल, मेरे आदर्श मुझे इसकी इजाजत नहीं देते हैं। और तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे उसूल, तुम्हारे सारे उसूलों को घूम कर एक बात क्यों नहीं बनाई जा सकती रही? मेरा आदर्शों के लिए तुम अपनी जिंदगी पर खेलने के लिए तैयार हो, क्या किया होगा आदर्शों ने? एक चकमा रुपए की पुलिस की नौकरी, एक किराए का क्वार्टर, एक ड्यूटी की जीत, उस तरीका की वर्दी। ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। हम लोग एक साथ इस पर बात उठे थे, इतना तो कहा रहे थे, मैं कहा आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, मेडिकल है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। As we saw in this clip, Shashi Kapoor ji was very assertive in what he wanted to say. Initially, बड़े भाई ने उनके खिलाफ कहते हैं कि कौन सुन रहा है मुझे? बड़े भाई ये कह सकते हैं, but he says, जब तक एक भाई बोल रहा है, एक भाई सुन रहा है. Very assertively he says, makes things very clear. जब एक मुस्लिम बोलेगा, एक पुलिस, see the body language of Shashi Kapoor. When he tries to emotionally blackmail him,
का फोन आया था। रेणु जी, हेलो सर। हाँ, चलो एक मिनट मैं भी इसमें रेणु जी, आई एम ऑडिबल नाउ? यू आर ऑडिबल सर। Yes, sir, you are audible. So welcome back. थोड़ा सा ग्लिच आता रहता है. So what I'm saying, that assertive communication की बात कर रहे थे. When we saw that clip, do you have any comment? You can comment on the chat box. Shashi Kapoor ji was very assertive when either in the beginning, towards the end, and in the middle as well. कि जब तक एक भाई बोल रहा है, एक भाई सुन रहा है. जब एक मुस्लिम बोलेगा, एक पुलिस ऑफिसर सुने. And he says कि आप बाहर चले जाओ, कि और जगह कोई तो पुलिस स्टेशन है. Again he says, मेरे उसूल, मेरे आदर्श इस बात की इजाजत नहीं देते. Then finally अमिताभ जी gets aggressive. हमारे पास क्या है? What was the response of शशि कपूर जी? मेरे पास माँ है. Just cool, quiet. So that is assertive communication. So, example we see of assertive communication. Assertive communicator will also value other people. So these all 5 lines are very important. So we'll say, so what you are saying is this. Means I am trying to understand what you are saying. Because main reason of communication is understanding what others say. As Stephen Covey famously says, first try to understand and then be understood. In that book of 7 Habits of Highly Effective People. When other person says something, we can say that I can see this is important to you, but it is also important to me as well. We can talk more respectfully and try to solve the problem. As we had said earlier, we are looking to solve the problem. We are trying to looking for the solution of the problem. These words are very important. I think, I feel. I always say that feelings, thoughts and feelings are very important. So when you use these words, I think, I feel, I believe that way people understand you better. Someone has said something, you will say, you start your sentence with it. I would appreciate it if you let me understand your thoughts on this. These are the examples of assertive communicator. Assertive communicator will always be using these lines. Now what are the which is the best style now? You can comment in your chat box. Which is the best style? Do you think? आपका क्या विचार है? You know, Kanchana says assertive. Normally, Vidhi also says inevitably assertive. Everybody is saying assertive. Yeah, Anil says, Rajiv says depending upon situation. Yeah, that's very important. You have to understand how the situation is developing. Sometimes passive communication is also required. Once I was seated in my room, we had done some changes in the vocational training system. We had computerized it, and the students were made to pay fees through internet, and we had increased the fees as well. So what happened that all our unions people, all leaders, they came to my office, घेरावed me. मेरा घेराव हो जाएगा तो what can I do? I have 50 people coming to my room.
trying, shouting like anything. So what style I should be using? So circumstances demand I should be passive at the moment. I can't be assertive. बोले कि देख लेंगे. I did that only. Said ठीक है, हमारी बात है, सुनते हैं, देखेंगे. Just heard them out. देख लेंगे, तुम्हारी बात रख देंगे. So what I did was that in such a situation you need to be passive. And sometimes you need to be aggressive. Be aggressive also. हर बार assertive से काम नहीं चलेगा. We'll see a small example where aggressive communication is needed. It's a small video clip. You can see where the aggressive communication is needed. आप खुश हैं कि आप मगर खुशी का ये बेहुदा राज जो आप अपने भाइयों के सामने कर रहे हैं, आपकी छुट्टी मंजूर हुई है क्योंकि आपके लिए दुनिया में किसी प्रॉब्लम नहीं. अपने भाइयों में कोई ऐसा भी है जिसकी विधवा मां उसे देख नहीं सकती और उसका इकलौता बेटा की धूप में. कोई ऐसा भी है जिसकी मां की उसकी इंतजार कर रही है कि उसका बेटा जब जीत कर आएगा और उसे किसी का बुरा बाप अपनी जिंदगी की आग लिख रही अपनी रहा है और हर रोज बात को ये कहकर डाल देता है कि मेरी चिता तो आप थे तुम्हारा. अगर इन सब ने अपने प्रॉब्लम्स का बहाना देकर छुट्टी ले ली तो ये जंग कैसे जीती जाएगी? बताओ. ऐसा जंग कितना जीता गया था? अजरदास, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जाएगा सर. So that was the situation where demanded aggressive communication. So we have seen where we can be aggressive communicator, where we can be passive communicator, but it depends upon situation. But normally we should be assertive communicator. As I say, all styles have their proper place and use. But assertive communication is the healthiest. Why healthier? Because boundaries of all parties are respected. It's a win-win situation for all. Easier for solve the problem. Very few emotional outbursts will be there. But requires skill, philosophy change. You have to change your mindset and a lot of practice and hard work. And both parties do it, no one is hurt, and all parties will on some level. तुम्हारी भी जय जय और हमारी भी जय जय. It's all win-win situation. So that was all about communication. And in this session we learned what is the importance of communication and what are the styles of communication. We understood that for a communication to start, we have to encode, then we have to decode and transmit what we want to say, and we understood what are the three styles, what is passive communication, what is aggressive communication, and what is assertive communication, which satisfied
both my needs and your needs. All styles, as I say, have their proper place, but mostly we should be assertive in our communication. So with this, we come to the end of our session. Already we are running out of time. So we are leaving the tips for communications at some later date. We can take questions now. और अगर रेणु जी बोलेंगी तो we can. Thank you so time much. can take tips for. Yeah. Thank you so much for Over to your Renu ji. enlightening You can take session questions now. full of movie clips Thank you, and all. madam. Thank you. Ji. Thank you so much. Now we invite some, if somebody wants to ask questions. Ma'am, good morning. Renu ma'am, Ma'am, please, ji. I don't have a question, but I would like to vote sir की अगर इजाजत हो तो मैं vote करना चाहती हूँ. Sorry, ma'am, I am unable to listen to you. Am I audible? Yes. मैं कह रही हूँ कि अगर सर की इजाजत हो तो मैं एक लाइन कोट करना चाह रही हूँ, which is very relevant to what you said. I am Dr. Jyotsna from Allahabad. Welcome, Jyotsna ji. Welcome. Am I audible, sir? Yeah. Yes, madam. ओके नमस्ते सर. आपने जो कम्युनिकेशन के बारे में कहा तो उससे रेलेवेंट लाइन्स की वसीम बरेली, अगर इजाजत हो तो मैं कोट करूं. Sure, madam. ओके, तो ये लाइन्स ऐसे हैं. कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है. सही बात, क्या बात. या थैंक यू सर. साहित्यिक शहर से है, इलाहाबाद साहित्यिक शहर है, तो वहाँ से कोटा हिंदी में बहुत खुशी हुई. थैंक यू सर, थैंक यू. आपका बहुत ही एंगेजिंग सेशन था. थैंक यू सो मच. Thank you, ma'am. Thank you so much. You can take questions on audio also. Hello. Good morning, sir. Sangeeta ji. Good morning, ma'am. Sir, I have a query that as we discussed that we should try to be assertive in our behavior or in our communication. आवाज कट रही है, मैडम. How to stay Sir, assertive? please mute your audio, and that will be clear. How to stay assertive communicative in difficult situations when handling a team of 4 or 5 people? आवाज क्लियर नहीं है, कट रही है, कट क्या रही है, मैं पूरी आपको समझ नहीं पाया. मैं Am I audible, sir? आगे क्या बोला मैडम आपने? Sir, how to stay assertive in difficult situations? Yeah. मैडम सिचुएशंस तो डिफिकल्ट है, इजी है, ये तो हमारे परसेप्शन पे डिपेंड करता है. असर्टिव कम्युनिकेशन में ये है कि आप अपना कूल लूज नहीं करें. कूल लूज करने से भी के साथ साथ आप अच्छे लिसनर बने. अगर आप सिचुएशन डिफिकल्ट है, आपके सामने वाला कुछ कह रहा है, आप सुनते जाएं. सुनने से नियरली 60-70% सॉल्व हो जाती है, क्योंकि लोग सुनवाई चाह रहे हैं. आप कूलली सुनने में लिसनिंग स्किल्स के जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, आप आई कांटेक्ट से सुने और एम्पैथी से सुने उसकी बात को. क्योंकि सुनते समय डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर आप कुछ बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, एम्पैथी से सुन रहे हैं, तो फिर आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. मुझे याद है मैडम, एक बार मैं नाइट ड्यूटी में था, एक हमारा वर्कमैन मेरे ऑफिस में एंटर करता है रात को. उसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंटिमिडेटिंग थी, लगा कुछ गड़बड़ हो सकता है. वो आया, मेरी सीट पे पीछे बैठा, वो कुछ झगड़ा करने आया था, मे बी मुझे असॉल्ट करने भी आया, मुझे लगा जैसे. पर मैंने एम्पैथी से उसको सुना, बस यस करके सुने और अल्टीमेटली उसकी बात सुन के उसका स्पीक आउट हो गया.
तो वो कूल डाउन होगी। आप अगर एम्पैथी से सुने, आई कांटेक्ट बना के एंड अंडरस्टैंड व्हाट ही वांट्स टू से, तो आप डिफिकल्ट सिचुएशन में असर्टिव हो सकते हैं। थैंक यू मैम। Thank you, sir. Thank you so much. Sir, can you hear me, sir? या राजीव जी। Hello. Yeah, sir. Yes, sir. Sir, the session was really very great. आपका सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि सर शुरू के मैंने 1-2 दिन मिस किए थे बिकॉज आई वाज डाउन विद फीवर एक्चुअली, एंड बीच में मेरी अटेंडेंस भी खुलते हुए भी मिस हो गई समटाइम, बट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट। आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट है, जब सेशंस खत्म हो जाए अगर हमें रिकॉर्डिंग पीपीटी वीडियो वगैरह मिल जाएंगे तो आई रियली बी ग्रेटफुल। हम लोग अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं और आप हमारी यादों में ताज़ा रहेंगे हमेशा। थैंक यू सर, थैंक यू राजीव जी। मैं ये जो पीपीटी है मैं रेणु जी के साथ शेयर कर दूंगा, आप ठीक है के उनसे ईमेल पे ले लें, या आप मुझे अपना ईमेल भेज देंगे तो मैं उस पे अगर इतनी बड़ी पीपीटी है मैं दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। मोस्ट वेलकम। ठीक है सर, मैं फीडबैक फॉर्म में डाल दूंगा उसमें मेरे को भेजने के लिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू। और मैं कुछ फीडबैक चाहूंगा कि मेरे सेशन में क्या चीज में इंप्रूव कर सकता था, क्योंकि ये नया एक्सपीरियंस है हम सबके लिए। नॉर्मली हम सेशंस कंडक्ट करते हैं एक क्लास के लिए, वी आर ऑल एक्टिविटी ट्रेनर्स नो, हम अपने टीचर नहीं, हम ट्रेनर बोलते हैं अपने आप को। क्लास में बहुत इंटरेक्टिव रहता है, ये नया अनुभव है पैंडेमिक के टाइम में। कुछ आप इसमें टिप्स दें मुझे कि मैं क्या इंप्रूव कर सकता था, क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। Hello, sir. यस सौम्या जी। Yes, sir. So, sir, initially I had it was a beautifully conducted session, and the one thing which I liked most was that you used very simple terms, you used very simple language, and you tried to connect the concepts with videos, which was a very different thing, and it like facilitated absorption of many concepts. So thank you for conducting in this manner, and I think I had a query which I shared in the chat box also, but while being in the process, you actually answered the query that all the styles are needed according to the situation you are in. So thank you for the wonderful session, sir. Thank you so much. Thank you. Over to Renu ji. Hello. Good morning. Hello, sir. हाँ रेनु जी। Is there anyone who wishes to ask the question? हाँ रेनु जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। Yes, ma'am. Please go ahead. Hello, ma'am. I had a question. Okay. Renu, ma'am. Hello. Hello, sir. Hello, sir. This was a very wonderful session which I have attended with you. Very clarity of thoughts. Sir, I had a question that sometimes we deal with certain kind of a people or certain kind of an organization. Here, there are some technical students, non-technical, and there are certain jargons which are being used and implemented. How these situations can be solved? Actually, jargons are typically area specific, college specific. Yes, sir. So jargons should not be used whenever, because they are in particular area, particular age group also they use that. So we should be trying to avoid those jargons and keep our. Actually, when we teach public speaking and all that presentation skills, we say know your audience. Should know who is your audience is, and communicate at them at their level only. अगर मैं उनके लेवल पे, अगर यंग स्टूडेंट्स हैं तो उनके लेवल पे आके वैसे वीडियोस लगाऊंगा, आपके लेवल पे आके मैं आपके लेवल के वीडियोस लगाऊंगा या जो भी बात करूंगा. We should know our audience and then communicate at their, उनके लेवल पे आके बात करने से ही काम चलता है. Okay, thank you so much, sir. Thank you, Dr. Shah. Hello, sir. I am Anjana here. Thank you for the wonderful session, sir. Thank you, madam. I have a query. Active रहेगी. Yeah. Thank you, sir. I have a query that how to handle a passive and an assertive person. Repeat करें थोड़ा सा. How to handle?
how to handle passive and an assertive person. आवाज फट रही है. How to handle अच्छा A ठीक passive person and an assertive person. passive and Am I audible, sir? no clear. थोड़ा जोर से बोले मैडम. Can आपके I, how to handle the clear. passive person. Passive person. Yeah. Yeah. Actually, passive basically आप उनसे speak out कराना है. So you should be a very good listener. You have to learn the listening skills. Listening skills पे एक special session we conduct. In listening, Harvard conducted a study on listening. Why do people listen? They say people, the whole result of that study indicated people listen to reply. People just listen to reply. The moment you start saying something, the other person will start framing his or her answer, assuming that you will say that, and he starts framing his answer straight away. That's where the mind works. So we should be listening to understand. So we should be trying to understand people and make that passive person speak out. And don't ask lead questions. Lead questions नहीं पूछने चाहिए कि तुम्हें खराब तो नहीं लग रहा. अब खराब तो लग रहा है is a lead question. तो ask him कैसा लग रहा है. So when you start asking open-ended questions, and that passive person will start coming out of his shell. Then he or she will share. तो आपकी listening improve होनी चाहिए. Listening with the intent to understand, with empathy, eye contact के साथ listening करना है. और lead questions नहीं पूछने. Leading questions नहीं पूछने. Open-ended questions पे ताकि वो speak out उसका हो सके. Thank you so much, sir. Thank you for the wonderful session, sir. Thank you. Good morning, sir. Hello. Morning. Sir, this is Kanchana here from Bangalore. Thank you very much for your engaging session, sir. Hello. Thank you. Can you hear me, sir? Thank you. Yeah. Perfectly. Yeah. Sir, I have a question to ask you. How to use communication as a tool to improve relationships between couples and also to create or promote interest in education for children, considering today's exposure to more of screen time? Yeah. You have two questions. I'll answer first one first. Improve communication with your spouse. Yes. This is a question which is haunting everybody. Main thing is listening intently. So there is a thing called LCC concept. Listen, clarify, and confirm. You listen to your spouse intently. Clarify your understanding of what he is saying. You confirm that I have understood you are saying this, I have understood in this way. So you follow this LCC concept. Listen with the intent to understand, listen with empathy, clarify if you are unable to understand, and confirm your understanding of the thing. धनिया कैसा लाना था मुझे पहले कंफर्म करना चाहिए कि मैंने समझा है. So that way, just keep listening now. Actually, we speak a lot. Although our body is designed in such a way, we have one mouth and two ears. So we should be listening more. But we are speaking, non-stop speaking. Listening कोई नहीं रहा है. The moment you start listening, आपकी प्रॉब्लम स्पाउस के साथ होगी या इम्प्रूव होगी. Listen within that to understand with eye contact. Eye contact के साथ बहुत इम्पोर्टेंट है. स्माइल के साथ सुनेगी तो दूसरा आ गया क्वेश्चन आपका. Second question is about this.
how to communicate with your children during this pandemic time. Actually, this technology is making us a slave. We are becoming slaves to the technology. Yes. So it's becoming very difficult to communicate with your children. Nowadays, my daughter who is around 25, she is in the house. She will text my wife कि मुझे खाना दे. Very difficult situation. समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है. वो अपने कमरे में बैठी है, text दे रही है मम्मी को. After 10 minutes she will come. मम्मी मैंने आपको टेक्स्ट किया है. मम्मी 24 घंटे तो टेक्स्ट देखती नहीं ना. मैंने व्हाट्सएप किया मुझे खाने. So we have to understand कि human interaction is most important aspect. आपको face to face contact का कोई substitute for that. Speak to them, sit together, and generate common points of interest. Actually, what happens is that we have our own interests, and our generation, which is Gen Y and Gen Z, has different interests. We have to find a common interest, and as a parent, start taking interest in what they are interested. We should start taking interest in what they are interested. Once we do that, then we can then they will feel that we are on a common platform. So my daughter is one of seeing Korean serials these days. I should also start seeing some of them. And we can discuss them on a common platform. इकट्ठे बैठेंगे, चाय पे बैठेंगे, खाने बैठेंगे, we'll discuss that Korean series. You know, they are totally Korean series. We are interested in old songs. We are interested in different things. I am interested in watching Madhumati or different movies. But we are interested. You try to develop interest in what your son or daughter are interested. Once you get interested in that, then you can come to the common platform and connect with. Main thing is making connect with this Gen Y or Gen Z. If you are taking interest in what they are interested, you can improve your communication. That's what I feel. Thank you. Thank you. Thanks a lot, sir. Kancana, I think I am able to clarify what you wanted. Yes, Good sir. afternoon. Sir, I am Srinivasa Dashgupta from West Bengal. Can I ask you some questions? Sure. थोड़ा सा louder रहेंगे तो मैडम ठीक रहेगा. Actually, sir, I have two questions. First of all, is aggressive communication, is it habit or style? Is it? Habit or style? It is basically a habit. It's a learned behavior. You grow up, you watch people who are aggressive, you sometimes find them winning. It's a learned behavior. The way you learn, but it's not a good behavior. It's to be used very sparingly. This will disconnect you with your subordinates, and you will not be a successful person if you are very aggressive communicator. And you won't get feedback to an aggressive communicator, aggressive head of the unit. Nobody communicates. He'll say yes sir, हाँ sir, बहुत बढ़िया. Everybody will say बहुत बढ़िया sir, क्या बात है? You are, आप तो great है sir, great. Ultimately, वो कामयाब नहीं है. In certain situations, you can use aggressive communication, as we saw in that movie clip of border movie. कभी करना पड़ेगा. You have a subordinate. You are reminding him this is the deadline. You are alerting him that this deadline is approaching. Assertively आप उसको बता रहे हो कि look, please get it on time. आप ये भी पूछ रहे हो कि problem तो नहीं है, मुझे बताओ. If he still doesn't do, then you can get aggressive. But you should be acting aggressively. दिल पे aggressive नहीं लेना. आपकी acting aggressive होनी है. तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी. आप acting कर रहे हैं aggressive होने की. अपने दिल का ख्याल रखिए. उसके बाद आप नॉर्मल हो.
You act aggressive, don't be aggressive. Okay, sir. Sir, if someone have this aggressive communication, so how to change this? If you have, If someone have this aggressive communication as a skill, so how to change this? As this is not the right way. चेंज मैनेजमेंट इज मोस्ट डिफिकल्ट थिंग ना. चेंज मैनेजमेंट पूरा पढ़ना पड़ेगा मैडम. सबसे पहले चेंज के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू डोंट चेंज what will be the consequences of not changing. You have to deliberate within yourself. If you don't change, what are the consequences of not changing? If you are able to, you are ready to accept those misfortunes which you will encounter if you don't change. That's cost you have to bear. You have to realize what are the costs which you are suffering by not changing. Changing is difficult, but as Herodotus had said thousands of years back, the only thing constant in this world is change. चेंज तो करना पड़ेगा. एक गाना मैडम आपको याद होगा, फिल्म 420 का, श्री 420 का, तो बोलता है दुनिया के साथ जो बदलता जाए, जो इसके सांचे में ही ढलता जाए, दुनिया उसी की है जो चलता जाए, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़. मैडम बदलना जरूरी है, चेंज करना जरूरी है, वक्त के साथ बदलना. दुनिया के साथ जो बदलता जाए, जो इसके सांचे में ही ढलता जाए, दुनिया उसी की है जो चलता है. थैंक यू. Okay, sir. Thank you. Thanks a lot. It's over to Renu madam. Hello. Good morning, sir. Good morning, Amir. Sir, thank you for this amazing session. Sir, currently I am in 4th year of mechanical engineering. Sir, I wanted to ask, apart from study, what others we need to develop in order to get a job in PhD? Actually, most important thing is the communication skills. Soft skills सबसे important है आमिर, चाहे वो इंटरव्यू में जाना हो और चाहे कहीं भी जाना हो. लेकिन सॉफ्ट स्किल ओवरनाइट नहीं आएंगे. ये जो भी है आपका पिछले 20-21 साल में आपने जो पढ़ा है, देखिए मैं पढ़ने पे बहुत जोर दे रहा हूँ. आपने जो किताबें पढ़ी हैं, आपने जो एक्सपीरियंस सोसाइटी के साथ किया है, जो इंटरेक्शन किया है, उसका टोटल आपकी पर्सनैलिटी बनाती है. आप अपने शेल में रहे हैं या आपने सोशली बहुत एक्टिव रहे हैं, आपने क्या अच्छी किताबें पढ़ी हैं, क्या ज्ञान प्राप्त किया है. तो नॉलेज के साथ एक्सपीरियंस दोनों काम आते हैं. भी आप बहुत यंग हैं तो एक्सपीरियंस तो वक्त के साथ ही आएगा. फिलहाल आप अच्छी किताबें पढ़ के, आजकल किताबें पढ़ना बहुत कम हो गया है, अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो वो नॉलेज आपके साथ स्टे करता है. अब मैं एक आप पूछेंगे किताबें ही क्यों, गूगल बाबा तो है ना, गूगल बाबा से क्या मिलेगा, वहाँ सब कुछ मिल जाता है. आमिर, गूगल बाबा पे सिर्फ इंफॉर्मेशन रहती है. और लाइफ में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इजी कम इजी को, कुछ चीज इजीली आती है वो इजीली चले जाती है. इजी कम इजी को आपके माइंड में, आपके दिल में वो स्टे नहीं करती है. लेकिन आप बुक्स पढ़ें. अब बुक्स क्यों स्टे करती हैं ये भी आपको मैं बताता हूँ. क्वेश्चन आपका है कि बुक्स क्यों स्टे करती हैं. तो आमिर, आप जब बुक पढ़ते हैं, एक दिन में अगर एक किताब है 300 पेज की, कितने पेज पढ़ लेते हैं आप एक दिन में, बताइए हमें. Sir, nearly about 10 pages. हाँ, 10 पेजेस. फिर नेक्स्ट डे आप जो है जब 11th पेज पढ़ने जाएंगे, तो क्या आप 11th पेज से स्टार्ट कर देंगे या पहले आपको पहले 10 पेज को रिकॉल करना पड़ेगा? पहले आपको रिकॉल करना पड़ता है. रिकॉल करना पड़ेगा. फिर आपने वो 20 पेज पढ़ लिए, 20 पेज पढ़ के जब 21वां पेज पढ़ेंगे 4th डे या 5th डे कभी, तो फिर आपको 20 पेज रिकॉल करने पड़ेंगे. कभी आप आगे बढ़ेंगे ना. तो बुक्स आपके साथ स्टे करती हैं. क्यों स्टे करती है? क्योंकि आपको बार बार पढ़ना पड़ता है, रिकॉल करना पड़ता है. जब आप पूरे 300 पेज पढ़ लेते हैं, आपको कम से कम 30 बार आप उसको रिकॉल कर लेते हैं. तो बुक्स की जो रीडिंग है वो स्टे करती है आपके साथ.
आप देख रहे हैं मेरे पीछे काफी सारी बुक्स के शेल्फ पे बुक्स रखी हुई है, आज भी बुक्स पढ़ता हूँ मैं। तो क्योंकि जो कोट्स मैं कोट कर पाता हूँ, जो मैं चीजें जस्ट अभी क्वेश्चन में क्यूए के दौरान भी कुछ, चाहे वो गाना है क्या है, तो बार बार किया गया है, हर बार किया गया है, बार बार किया गया है, तो वो स्टे करेगा। तो गुजारिश यही है कि आप खुद पढ़ें, किताबें पढ़ें, इंटरेक्टिव बने सोसाइटी के साथ, वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर निकल के रियल वर्ल्ड में आए। रियल वर्ल्ड डिफरेंट है, वर्चुअल वर्ल्ड डिफरेंट है। We'll go a long way. All the best to you, Amir. Thank you, sir. And then this time, I would request participants that we will have 1 or 2 more questions. Yeah. If you have 1 or 2 more questions, we will have before we wind up. Last 2 questions. Yeah. Okay. Sir, I would. Yeah. Sir, which specific books would you recommend? Yeah, you should. One is Seven Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. You must read this. 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. Very important book. And one you can read, very important book, How to Win Friends and Influence People. Dale Carnegie. Bible है. सबसे पुरानी सेल्फ हेल्प बुक है ये. How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. ये पढ़ लिया, जीवन में सक्सेस ही सक्सेस है, कुछ नहीं पता उसके बारे में। बहुत जबरदस्त किताब है, How to Win Friends and Influence People। एक मैंने जो सेशन में बताई थी, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, जरूर पढ़े, डैनियल कानेमान। The last question. With this, we would like to thank Shri Rajesh Kumar, who is currently heading Human Resource Development Center at BHEL Haridwar. And सर का जो लेक्चर है, मैं इतना कहना चाहूँगा कि सर ने 1.5 hours में गागर में सागर भर दिया है। He has shown us several tips. He has told us about different kinds of communication skills and styles that are required. And he has shared with us his experience, which is very valuable to all the participants. And also, I have also learned several things in this lecture. And because he is also working in an organization, non-academic organization, so several things we have learned from him. And we are very thankful to you, sir, for giving us the time in this STDP. On behalf of all the participants, I express my gratitude to you. It's over to Renu ma'am. Thank you so much, sir, for this wonderful session. Thank you, madam. You have exemplified all the paralinguistic features that we really talk about in books and read in books. All kinds of, facial gestures and tonal modulation that you have really exemplified. So we are very much thankful of your presentation. I am certain that all the participants must also have enjoyed your session the same way as I have. So we are truly thankful, and we would look forward to have your session in the future course of events. My pleasure. Thank you so much, sir. Thank you, sir. This is Ajay Chaudhary. और कमेंट्स जो है लोगों के कमेंट्स से मुझे शेयर कर लें। Hello. फीडबैक को मैं स्टडी कर सकता हूँ। Pardon, sir. Would you please repeat? जी। हाँ, आप एक रिकॉर्डिंग मुझे दे दें जरूर इसकी सेशन की। जरूर सर, ओके जी। और जो फीडबैक है लोगों का वो भी थोड़ा दे देंगे, तो रिटन फीडबैक तो मुझे इम्प्रूव करने के लिए काफी मैटर मिल जाएगा। जरूर सर। Hello, sir. Thank you. Yes. I am Ajay Chaudhary, the convener of the STTP on soft skills and personality development. We extend a warm thanks to you for accepting our invitation and sparing your precious time from your busy schedule. Thanks is also due to your scholarly talk delivered today in this STTP, in the penultimate session of the 5 days STTP, which has been highly
appreciated by the participants, as I can see in the comment box. And lots of we are also receiving personal messages on our WhatsApp and contact details. That thank you for inviting Sri Rajesh sir. So we look forward to your collaboration in the near future also, sir. We also Sure. learned a lot being teacher, and you have very incisively deliberated on the nuances of communication in a very simple and lucid manner. So thank you so much, sir, for being so kind, very generous and supportive to all of us. Thank you so much, sir. My pleasure. It's my pleasure. Pleasure is all mine. Thank you. So thank you, ma'am. Renu madam, would you like to say something more so that we can bid adieu to sir? Nitin sir, are you there? Yeah, ma'am is not here. So finally, we are very thankful, sir, again. And now we would like to go for the next session. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Bye-bye, sir. Okay. Hello. Yeah. Please join the next session at 2 o'clock. Here, all the participants, please join the session at 2 o'clock. That is going to be our last session of the 5-day STTP program. Thank you very much.